in our local district with the OPS International School. And this is an initiative by our Foxy president, Dr. Shanta Kumari. Thanks to you, ma'am. And actually, this is our first time also organizing such a meet. So I think there will be some technical glitches in the mid. So apologizing for that. So now I would request Dr. Riddhi Desai to start the first session of today's Dheera project. And the students have already logged in through the common registration link of the coordinator, and they are sitting at their Audi, and they'll be sending the pics and videos, and they'll switch on the camera of the teachers who have registered separately in between. Dr. Riddhi, over to you. Thank you, ma'am. Madam, before you take your section, I have to share Shanta ma'am's video. Shanta ma'am's video, yes, that's what I'm not sharing as of now. So good morning, everyone. Thank you, Dr. Gitanjali, for the generous introduction. I'm Dr. Riddhi Desai. I'm a gynecologist from Mumbai. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे ये वाव के बारे में मिलने आए हैं, बात करने आए हैं. तो what is it? तो हम चालू करें हमारा सेशन, उसके पहले हम डॉक्टर शांता कुमारी मैडम से सुनेंगे. श्रीमान, कैन यू प्लीज प्ले दैट वीडियो? शी इज आवर प्रेसिडेंट ऑफ फॉक्सी. Dear friends, Foxians, and the women of my country, I am Dr. Shanta Kumari, President of the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. As a doctor and a woman myself, I have observed very closely how prevalent violence against women is across the strata of our society and the enormous impact it has on the health of our women. My theme for the year as the President Foxy is Foxy for all always, and Dheera, stop violence against women. Dr. Shanta Kumari, who has relentlessly campaigned for the issues of girl child. I was happy to be the ambassador of Foxy Figure Ox in 2013, and I hope that me being an ambassador has motivated a lot of girls and many families. Violence against women is a serious human rights violation, leading to injury and sometimes even death. Unfortunately, 1 in 3 women experience some sort of physical and sexual violence during their lifetime. Violence in pregnancy is also widely prevalent, leading to unwanted pregnancies, unsafe abortions, neglected pregnancies with no antenatal care, all these contributing to maternal morbidity and near miss. As obstetricians and gynecologists, we have a great opportunity to assess and support women who experience violence because of the unique opportunity where we get to see them during the pregnancy, during the family planning visits, during their annual checkups, and multiple other times when they come to us. I strongly believe that by eliminating the violence against women, we are not only reaching the SDG goals, but also creates a just and equal society for our women. Until we make men and boys active partners, we can never end the violence against women. In an endeavor to sensitize our own fraternity, my initiative of Dheera was started to eliminate violence against women. I completely support her vision and mission as President Foxy, and also especially support her campaign, Dheera, Stop Violence Against Women. It was in 2016 at the launch of Dheera. We brought together the police, the obstetrician gynecologists, the National Commission for Women, the women and men on one single platform to wear orange and say no to violence against women. We organized the public forum and cyclothon to launch Dheera. In 2017 at the Foxy Figo Congress, we partnered with men and organized the bikeathon and the flash mob. The high point of Dheera was at the International Figo Congress at Rio, Brazil in 2018. The declaration on no to violence against women was signed with Figo and WHO. It was here global societies pledged their support to end this violence against women. The Dheera campaign and march at the World Congress of Figo in Rio in 2018 got wide international publicity. No change is possible unless the young minds adopt it and make it a part of their life.
Young minds are open and creative. They accept change. Foxy has always worked with adolescents for their health and well-being. Dheera this year adds a new page. I'm happy to share with you all that we are launching the Dheera online school certification course across the length and breadth of our country in all the schools. Foxy for all always. Dheera, stop violence against women. So hello everyone and welcome back. I'm Dr. Riddhi Desai, gynecologist from Mumbai, and I welcome you all to this nationwide campaign on violence against women. I would like to thank our president, Dr. Shanta Kumari ma'am, for giving us all this opportunity to spread the message of violence against women. तो ये जो है हम बात कर रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में, तो यहाँ पे सब लड़के क्यों हैं? तो ये लोग सोच रहे होंगे हम यहाँ क्या कर रहे हैं. नहीं, इट इज फॉर बोथ ऑफ यू, for men as well as women, to understand what it is so that you can stop this violence. So now I would like to share my screen. We will try and understand more about what we are talking today, violence against women. मेरे साथ Dr. Sheetal Bandawar and Dr. Veera Lohia are here, and together we are going to cover a lot of topics for you. So the first topic that we are going to cover is what is violence against women and what is Dheera. ये project का नाम Dheera क्यों रखा गया है? So आज हम बात करेंगे Dheera के बारे में, violence against women types क्या हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, role of a bystander, what is peer pressure. So first, I would like to remind you all and request you all to please fill in the pre-test and the post-test and feedback. तो ही आपको ये certificate मिलेगा. So I hope the teachers will take care of this for you. So what is Dheera? Dheera means courage, the power of being together. तो ये हमारा हैशटैग है जो हमने क्रिएट किया है, जिसको हम कहते हैं धीरा, हैशटैग धीरा टुगेदर. Okay, so we will talk a little more about this later. Not all men practice violence against women, but all women live with the fear, with the threat of male violence every single day, all over the earth. So this violence against women is a global human rights violation. Short-term and long-term physical, economic, and psychological consequences are there. It prevents their full and equal participation in the society. The magnitude of its impact on the society is immeasurable. Conditions created by the pandemic, example, including lockdowns, reduced mobility, heightened isolation, stress, and economic uncertainties have led to an alarming spike in this domestic violence. So now let's see, are you aware of anybody you've seen or have experienced sometime in life where women are being beaten? उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको मारा जाता है, या तो घर में, स्कूल में, या आस पड़ोस में. तो आपको क्या लगता है, ये सही है? आपको लगता है कि इस बिहेवियर को क्या बोलना चाहिए? क्या ये नॉर्मल चीज है? Is there any word to describe it? तो क्योंकि हम सबके पास इंडिविजुअल चैट बॉक्स नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू वी मे हैव एन इंटरैक्टिव सेशन एट द एंड. बट व्हाट डू यू थिंक, आपके दिमाग में सबसे पहला क्या वर्ड आना चाहिए इसके लिए? इसको बोलते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. जो हमने सुना मैडम शांता कुमारी के वीडियो में भी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या है और कितना बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम है ये चीज. सो violence against women is the most shameful human rights violation. It is most widespread. It knows no boundaries of geography, culture, or wealth. As long as it continues, there is no real progress towards equality, development, and peace. So, what is wow? सिर्फ किसी को मारते हैं उसी को वाव बोलते हैं, उसी को सिर्फ वायलेंस बोलते हैं? No. There are very different types of wow. Okay, so forcing a woman to live in fear.
ओके लड़की डर रही है, क्यों? क्योंकि देयर कैन बी मेंटल काइंड ऑफ अब्यूज, देयर कुड बी सेक्सुअल अब्यूज एंड देयर कुड बी फिजिकल अब्यूज. सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ वाओ? ये क्यों होता है, हमारी सोसाइटी में इतना प्रेवलेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जेंडर बायस, सेक्सिज्म, patriarchal society, and gender stereotyping. And now we'll learn a little more about all these things in detail. So there is not one factor, but there are lots of factors together that can contribute to this violence. So पहला क्या है? Gender bias. So हमने देखा होगा there is a preference for males. Girls are usually considered a burden by parents. There is feticide, infanticide, neglecting female health issues. What is patriarchy? ये हमने बहुत सुना होगा, ये हमने ऑनलाइन भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे सुना होगा. So patriarchy is a system of society or a government in which men hold the power and women are largely excluded from it. Decision making rests with the male in the family. हमेशा कहते हैं नहीं पापा डिसीजन लेंगे या हमारे ग्रैंडफादर जो है वो डिसीजन लेंगे, तो इसको हम पेट्रियार्की बोलते हैं. व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? तो ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स जो है वो हमेशा फेथफुल रहनी चाहिए, या तो बहुत ज्यादा इमोशनल रहती है, सिर्फ वही रोती है, बॉयज डोंट क्राई. सिंपैथेटिक ज्यादा होती है लड़कियां, डिपेंडेंट ज्यादा होती है. बट उसी कंपैरिजन में बॉयज को बोलते हैं नहीं नहीं बॉयज आर वेरी कॉम्पिटिटिव. बहुत जैसे गर्ल्स को बोलेंगे वो बहुत इमोशनल है, तो बॉयज बोलेंगे नहीं हम तो बहुत लॉजिकल है. They are strategic, boys are aggressive, boys are independent. But no, all these words that I have used are not in particular used only for girls or used only for boys. So when it is used in context of only one gender, it is called as gender stereotyping. Now, what is sexism? It could be prejudice, stereotyping, discrimination typically against women based on sex or gender. So can you think of these any examples of sexism जहां पे बोलते हैं कि सिर्फ women के against ये prejudice रहती है? What is toxic masculinity? तो जब men in the family or at workplace when they say I am a man, I'm strong, I don't cry, I can control, I am the boss, I am the savior, तो ये क्या सही है? No, it is toxic. That is why it is called as toxic masculinity. So why doctors for women want to talk about wow? आप बोल रहे होंगे कि okay, this doctor introduced herself as a gynecologist, but why is she talking about violence against women? So gynecologists are points of contact who can recognize changes in lifestyle, and most of the health problems of women are rooted in violence. Because of these health problems during the pregnancy have roots in violence. So why Dheera? So this is the campaign which was founded by our president, Dr. Shanta Kumari, to stop this violence against women. And you've seen in the video, this has taken momentum and reached all global heights. So now globally, this is recognized and we are all together working on this. I must congratulate all of you for being a part of this global movement. So what is this WOW campaign? इस campaign के अंदर all India there is an initiative to sensitize, orient and train almost 36,000 plus gynecologists and obstetricians and almost 500,000 plus boys and girls from 9 to 12 standard and almost 15,000 teachers. These are a few glimpses of our past programs of violence against women. So, courageous together, say no to violence against women. So, ये हमारा hashtag है, which I spoke to you about earlier. If you are on social media, please use this hashtag, hashtag Dheera together, and show your support. So we are trying to build a voice and our target is 100,000 plus tweets. So add your courageous voice to this conversation. And once again, reminding you, please, to get certified, आप pre-test and post-test or feedback form भरिएगा. And please, teachers, help your students to do this so that they can individually get a certificate. Thank you. I would also be now taking our second talk.
I can see a wonderful audience out there. Thank you, I hope Dr. you all are Riddhi. enjoying. You explained very well. And I hope the students are getting to the roots of the topic and they can understand the gravity of the situation, the real problem that is amongst our society. So, welcome you for the next session also, ma'am. Thank you Please. so much. If there are any questions, please you can, pass it on to your teachers so they can put it on the chat box and we can take up these questions. So now I'm going to share the second one. Okay. So now we have understood what violence against women is. And like I told you earlier, it is a composition of a lot of things. There is not just one thing that can cause this violence against women. So we are now going to understand the types that are there. Sometimes the types are so subtle that you may not even realize this actually is violence and that you have to take some necessary steps. So what we are going to understand today is physical violence. In physical violence, there are acid attacks, honor killings, femicide, and sexual violence. What are psychological violence? मतलब कि mental violence. तो financial manipulation, emotional abuse, bullying, stalking, eve teasing, and criminal intimidation. And there could be then a combination of combination of both physical and mental violence, which is domestic violence. So let's see a little more in detail. Again, reminding all of you to please register yourself individually. Every student will do that and fill their pre-test, post-test, and feedback questions. So let's understand what physical violence is. So now first, we are going to talk about acid attacks. I'm sure all of you must have heard about this film Chapak. If not, so I'll tell you, this film was a path-breaking film because it talks about survivors of acid attack. So what is acid attack? Of course, it is a form of assault which involves throwing corrosive substance onto another. Sometimes it can be used as a form of blackmail. So who is this? Who was this film based on? It was Lakshmi Agarwal. So Lakshmi was attacked in 2005 at the age of only 15 years after rejecting the romantic advances of a man who was 32 years old. So maybe you can watch this film later under parental supervision, but you have to understand that this is completely wrong, and this does not necessarily mean that this can happen only with females. This can happen with men too. So say if you are threatened like this, or say if you see somebody, what can you do? So if you are threatened or attempted, attack is attempted on you, then report. Please do not get afraid. Be brave. Do not keep quiet. Report it to a trusted adult and police. Make sure to stay away from people who are threatening you. Always travel with others. Make sure that you are telling your parents or some adult who knows where you are at all times. Under Section 362B IPC, imprisonment not less than 5 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. So these people, if you immediately report and this person is caught, they can be imprisoned. Okay. If you are attacked, please report it to a doctor. Make sure to get treatment as soon as possible. Please talk to your parents, teachers, police, or anyone you trust. Make sure you stay away from the perpetrator of the crime. The person who does this to you, please stay away from them. Report attack to authorities. And like I said, they can be imprisoned and they can be fined. Now, the second type of a physical violence is honor killing. So a murder of an individual, either an outsider or a member of the family, used to protect reputation of the family, as it is believed that the victim brought disrepute to the family. The other kind of violence, which is typically directed towards women, it's a gender-based crime called femicide. So it arises when the society prefers males over female. It can take forms of
women-based hate crime, or infanticide. You must have heard about, if a girl child is born, they're immediately killed, or they do sex determination, and before the baby is born, they try and kill the female fetus. That is called feticide. Now, sexual assault, which is probably the most common violence against women. So, it is an act in which a man sexually touches a woman or compels her to get naked forcefully and without outward consent. This word consent is extremely important and should be understood by both men as well as women. Okay. Punishable under the section 354 IPC with 1 to 5 years and a fine. Causes long term mental trauma to the victim. If you see sexual assault taking place, please try and intervene and stop it. Or if you think that you can be overpowered and you won't be able to do anything in the situation, please call for help. Do not be just a person, just a bystander. And probably we'll be in the later on lectures, you will know what actions you can do from your end. So call for an help if it's your friend, or even if the friend is your abuser, please try and stop that person. So if you remember this famous person, this case that happened way back in 2013. So this Nirbhaya Act came out from that, and section 375 IPC, which protects women against any type of rape. Section 354A IPC protects against sexual harassment and unwanted physical contact. And now we have this POCSO Act, POCSO Act, that is in 2012, which protects minors from sexual abuse. So we have a lot of ways to stop and prevent these things. But what is important is you report it. So if you are a survivor, please do not shame yourself. You are not to blame. Don't take a bath or wash yourself. Don't change your clothes. Write down what happened so you remember everything. Inform the police immediately. Report in a timely manner so that there is evidence. Don't be afraid to speak up, as you are never at fault and an abuser is bound to repeat actions. What is more important is don't feel ashamed. That is why you think that no, we cannot speak up. And of course, this can happen with both men as well as women. Okay. So please, if something like this is happening, definitely talk to your adult. Now, there could be psychological violence. Like I told you, mentally somebody could be abusing you and you may not even know about this. So try and understand this. There could be financial manipulation. It involves making or attempting to make a person financially independent by maintaining total control over resources, withholding access to money, and or forbidding attendance at school or employment. So there's this case study that I'll talk to you about. Let's see what you can understand out of this. So Raj monitors his wife Ananya's bank account and doesn't let her buy what she wants. Now Raj's parents don't let Ananya go to work. So what can Ananya do? What do you think? So of course, we can take these questions if you have any out of this at the end, or your teachers can post this in the chat box. Now we'll move on to the next one, which is emotional abuse. So undermining a person's sense of self-worth through constant criticism. So most common examples could be name calling, damaging a partner's relationship with children, not letting partners see friends or family. So this is an example of Shreya, who is married to Alok, whose colleague mocks him for earning less. Feeling hurt over his pride, Ashok takes out his frustration by drinking more often, frequent rage behaviors, tantrums by breaking things, yelling, and blackmailing Shreya of divorcing her. This constant fault-finding behavior of Ashok had a toll on mental health of Shreya. What do you think can Shreya do? The other form of emotional abuse is bullying. Continuous harassment, either verbal or physical, can be in the form of cyberbullying or raging. So here is a story of Neil, a senior who asks out Ria, his junior, who rejects him. He feels embarrassed, and to bandage his pride starts up a rumor that Ria is a slut.
he starts to harass her every day, calling her fat, ugly, and other such derogatory terms. He throws eggs at her house with his friends, pours water on her homework, and provokes all his friends into teasing her whenever they see her. So you see this taking place. What do you think? How can you help Priya? And whom do you contact? So this is eve teasing. And you have to understand this is a very common practice, probably something which happens commonly in schools. So if you are seeing a case scenario like that, if you're going through it yourself, please report it. Now, what is cyberbullying? This is the latest thing that is coming up. It is an online form of bullying and abuse when technology is used to write aggressive, embarrassing, or hateful messages to and about peers in order to intimidate, harass, shame, and control. It includes threatening, abusive text messages, creation of embarrassing images or videos, sharing them, creating fake accounts, stealing online identities, sharing sexually explicit messages. So, did you know females are 2 times more likely to be victims of cyberbullying? So there are various forms of cyberbullying, and you have to understand this. So exclusion. It is an act of deliberately excluding someone from an online group. Gossip, damaging a person's reputation and or relationship with family or friends. Frapping, impersonating a person by logging into someone else's social networking account. Harassment, constant and intentional posting or sending offensive, threatening messages. Outing, and trickery, act of tricking someone into revealing personal information, which is then shared publicly to humiliate him or her. Cyber stalking, harassing online by posting or sending unwanted or intimidating messages, including real threats on safety, or creating fake profiles, which are created to hide their real identity. So I am sure all of you have seen something or this other either happening with you or happening with your friends or family. Please take action. Please take note of this and make sure you're reporting this. So what can you do if you are being cyberbullied? So you check the platform's anti-bullying policy. Get in contact with customer service representatives if confused. Blocking and reporting, make sure to collect screenshots. File a criminal complaint. Approach the cyber investigation cell. You can report to cyber cell from any city, and to report to the cyber cell, lodge an FIR or reach women-oriented or which are called she teams. Stalking. So when an individual follows a woman and repeatedly tries to contact her without consent, can occur digitally. Section 354D IPC imprisons the culprit for 1 to 3 years, and culprit can be liable to fine. So here is an example of Sanjay, 17 years, starts to follow around Meera, 17. Everywhere she goes, learning her everyday routine, taking pictures of her, joining her tuitions, etc. His friends start to encourage him, comparing him to popular roles that actors have played in Bollywood. Meera starts to feel uncomfortable. What can she do next? Think about this. Now, voyeurism, the watching and taking pictures of women without their consent and without the knowledge of the woman. This can be punishable by crime under Section 354 IPC, imprisons the culprit for 1 to 3 years on first conviction. After more convictions, abusers can be imprisoned for 3 to 7 years. Eve teasing. Obscene actions like unwanted remarks, sexual advances by a man to insult a woman in public space is eve teasing. Section 294 IPC punishes men who act, speak in an obscene way for a maximum of 3 months. Section 509 IPC punishes men who act or uses an object to insult a woman with jail term up to 3 years. Criminal intimidation. When someone is threatening to cause death, hurt grievously, or to destroy your property. Section 503 IPC can cause imprisonment for up to 2 years or a fine or both. Sexual harassment. Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, sexual remarks, showing pornography without consent all constitute as sexual harassment. Can be reported under Section 354A IPC, which is punishable with up to 3 years of imprisonment.
So this is a case study. There is unseasonal rain that has caused a farmer to lose a considerable amount of crop that he was unable to sell. To make ends meet, he takes a loan from the village loan shark, Raghu. After a few months, unable to pay his loan back, his daughter offers to help settle her father's debt by working for a loan shark. Taking advantage of their desperation, Raghu sexually harasses the girl. So if you saw this happening, what could you do? Think about it. Now let's talk about a combination of both physical as well as mental, which is domestic violence. So we have seen this at a rise right now in this COVID pandemic because people were isolated, people were in just one place, they could not move out. So it just doesn't have to be between a married couple. Any pattern of behavior used to maintain power or control over partner. What are the main issues? Most victims of domestic violence do not know that they are being abused. It is hard to believe a trusted partner could be manipulative, can also be harassment from in-laws. What are the examples? Using economic abuse, using coercion and threats, using intimidation, using emotional abuse, using isolation, minimizing, denying, and blaming. So there is a cycle of abuse. Domestic Violence Act. This came into place in 2005. It covers physical, sexual, verbal, and economic abuse. It grants immediate protection, punishes the abuser with imprisonment up to 3 years. So, our mission is ending violence against women one step at a time. So, once again, reminding you to register individually, fill in the pre-test, post-test, and the feedback to receive your certificates. So courageous together, say no to violence against women. Please use this hashtag Dheera together to tweet. And we are trying to build a voice. Our target is more than 100,000 plus tweets. So add your courageous voice to this conversation. Thank you. Veera, good morning. Can I come in for a minute, please? Yes, sir. Good morning. Good morning. How are you doing? All well? Oh, all well, sir. Yeah. The power cut good to is see- there. Yeah, very good to see. A huge good morning to all you students there. It's so wonderful to see each one of you here. And, sitting in this conference room and trying to learn and also experience and getting oriented with when to say no to violence against women. A huge congratulations to each one of you. A huge congratulations to the school as well as the principal and the teachers who have, given us this opportunity to come and address each one of you here. Riddhi and Shwetal, thank you so much for taking this opportunity to, conduct this session for this school. I'm sure, you will take this forward in other schools as well as you go ahead. I can see at least about 15 people who are online. So I'm not too sure if they are teachers or if they are students. But if they are students, then it might make us a little bit of engagement in the chat box for the case studies that we are talking about, so we can invite them to give their responses in the chat box. And I will also request, if at the end of these sessions, we can have some face-to-face or one-on-one responses from the students who are there, just to get a sense of what they have, understood, and if it doesn't make sense at all for them to have gone through this. So with that, thank you so much, each one of you once again. And Veera, we really congratulate you for taking this process forward and being among the first people in your state to do so. I'm sure, with under your leadership and taking the lead, you'll be able to take it to more schools. And with the support of Shwetal and Riddhi, you will be able to do much more. And I'm sure there are many more master trainers who will be joining hands with you, all three of you, to take the process forward. So all the very best, each one of you. Thank you very much and have a lovely session going forward. Take care. Thank you so much, sir. Thank you.
It has been an absolute privilege to be here, interacting with these students. Since we did not have an individual, access to chat box with all of them, I have been trying to tell them, to encourage them, or the teachers can take the lead and, probably type out their inputs or feedback or questions in the chat box for us so that we can take them at the end. Or if any student wants to even interact with us, they can please stand up and probably come towards the camera, or switch on their mics, and we can always take up these questions with them. Yeah, that would be really wonderful. There will be some bit of engagement, because while they are hearing everything silently and sitting so very, very religiously and systematically, each one of them, it's important if we can understand what's going in their mind, if possible. Otherwise, it's fine. They can always come back to us through the teachers later on as well. Yeah. Great. Thank you so much. Yeah. Continue with your session. I had to butt in because at the end of the session, I was waiting because need to go into another one now. So I'll be leaving all of you all the very best. Please do continue. And that was a very persuasive presentation, Priti. Yeah. Thank you, sir. Thank you. So are there any questions from the audience? We can take them up right now. Or I would like to hand over to Dr. Sheetal Bandawar, who will continue with the sessions. If there is no question, then share my slides. Yes, madam. Please, you can go ahead. Dr. Dheera ma'am, please share my slides. Can you ask someone to share the slides of management of work? Shriman, could you please help out? Sure, ma'am, I'll do. The third one. Yeah. Third and fourth. तब तक सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन. सब स्टूडेंट्स जो भी अवेलेबल है अभी वहाँ, are you know what is about the violence against women? Why the WHO is doing this? Because the they are seeing that the woman is under the pressure, not in the childhood, not in the adolescent, after marriage, after they are बच्चे होने के बाद भी, बूढ़े होने के बाद भी they are in the pressure. So WHO is उन्होंने एक पल लिया है, मीन्स एक स्टेप्स लिए है कि that the young you are the young क्या बोलते हैं उनको roots. Now you have to do तो मीन्स आपको एक पेट तैयार करना है कि उनमें आपके जो भी बहनें हैं, जो भी माँ है, आपकी दादी, जो आपके फ्रेंड्स है, वो आप अच्छे से मीन्स वो सेफ रहेंगे, इसलिए उन्होंने ये स्टेप्स लिए हैं. तो द माय थर्ड लेक्चर इज ऑन द war management strategy. For Dheera, the initiative by the Dr.
Shanti Kumari ma'am, the president of Foxy of India. Next slide. What is the management of war? There is a table of contents. This is the introduction. Here you could describe the topic of section, then the role of bystanders. Here you could describe the topic of section, and briding the gender device. Here you could describe the topic of section. These are the three table of concepts. Next slide. Please register the pre-test and post-test for your future. So please do the pre and post-test feedback. As your teachers also is helping you to give a feedback on that. Next slide. What is the factors that contributes the war? That मैंने अभी बोला है कि पेड़ के जो जड़ रहते हैं वो क्या है? That is the main जो बोलते हैं ना जड़ से ही कमजोर है. वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि the gender bias is the main cause of the that fact. मतलब ये लड़की हुई, अरे यार लड़की हुई, क्योंकि उनको पता है कि आफ्टर जैसे लड़की बड़ी हो जाएंगी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी. भले ही वो सुंदर होंगी तो उसको मींस एब्यूज कर जाएंगे, बदसूरत होंगी तो उसको भी एब्यूज करेंगे, लेकिन उसके टैलेंट की कभी नहीं बोलेंगे कि शी इज वेरी गुड, शी इज इन वेरी मींस वो बाय नेचर बहुत अच्छी है, वो कभी नहीं देखेंगे. ऐसा है. दैट इज द जेंडर बायस जो अपन अभी ये सिचुएशन में देख रहे हैं. एंड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो अभी मैंने बोला है कि ऐसे जो अभी हो रहा है. सो यू आर द मोस्ट, जो आप जड़ें आपको हटानी है और आपकी अच्छी जड़ें लगानी है कि सो दैट जो आपको जो फ्रूट्स मिलेंगे वो अच्छा मिलेंगे. क्योंकि अभी जो मिल रहा है वो एंगर इश्यू मीन्स जो गुस्सा, देन टेंशन है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है उनको, देन जो लैक ऑफ कंपेंसेशन, उनका छोटा जो बचपन है वो भी कम इसमें जा रहा है, ड्रग्स लेना चालू हो गया है. तो ये जो सब हो रहा है वो किसकी वजह से? क्योंकि उनका जो जड़ें है वो अच्छी नहीं है. अपनी को जड़ें अच्छी करनी है so that we can plant a good future and good tree, so that we get a good fruits also from that tree. Next slide. What is the wow mindset? जो जड़े जो अभी मैंने अभी वही बोला है कि जो अपने को दिख रहा है वो जो झाड़ जो पेड़ दिख रहा है वो जो पेड़ है वो अच्छा नहीं है. अपन ही बोलते हैं ये अच्छा बुरा पेड़ है, ये इसके फल अच्छे नहीं आते हैं. तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके जो फ्रूट्स रहते हैं वो बहुत कड़वे रहते हैं. तो अपने को ऐसा पेड़ लगाना है कि जिसके फ्रूट्स अच्छे आएंगे, जो आपके भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके भी बच्चियों को, आपके भी बहनों को भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे. आपके मदर कौन से टेंशन में आते हैं, आपने कभी पूछा है उसको कि क्यों आप मम्मी आपको क्या चाहिए? अपन कभी नहीं पूछते, क्योंकि उनको यही लगता है मम्मी का काम तो यही है ना, यही तो करना है, सुबह उठ के पढ़ना है, सुबह करना है, सब काम ही करती रहती है. उस सोते वक्त कभी उसको गले लगते हैं क्या आप? मम्मी को एक बार गले लग के देखो, शाम को, रात को, मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी. उसका जो नेक्स्ट डे रहेगा वो वेरी नाइस डे, शी विल वेरी गुड फील नेक्स्ट डे. आपको अच्छे से और पढ़ाएंगे और अच्छे से खिलाएंगे. That is the wow mindset that the nature since childhood, the based on the way the child is brought up. Next slide. Shriman sir, thanks. What do you, if you know about the someone being abused, don't be afraid. Listen the victim story. अपन किसी की सुनती नहीं ना, अरे यार तू ना तेरी गलती होगी, ऐसा नहीं. एक बार उनका सुन तो लो, क्योंकि जैसे शादी हो जाएंगी, जैसे वो बहू हो जाएगी,
तो बहू का तो हमेशा गलत ही रहेगा, क्योंकि जो मम्मी बोलेगी वही सही है, जो पापा बोलेंगे वही सही है, लेकिन बहू जो बोलेगी वो गलत ही रहेगा. नॉट नेसेसरी. यू मस्ट आस्क अबाउट द बोथ. मैंने दोनों की तरफ से सुनो तो खरी, पहले सुनो सही. अगर उसमें गलतियां है तो सही में उनको चेंज करो. नॉट नेसेसरी अरे यार ये तो बीबी का गुलाम हो गया, ऐसा नहीं है. जो भी है, बीबी भी एक लड़की है, उसके भी पापा मम्मी है, उसका भी कुछ फ्यूचर है, वो भी पढ़ाई करती है. इतना स्ट्रेस से वो इतनी दूर तक पढ़ाई करके आई है, क्यों आई है? इसलिए आई है कि उसका भी फ्यूचर गुड होना चाहिए. तो ये भी सोचना चाहिए. सो डोंट बी अफ्रेड, लिसन टू द विक्टिम स्टोरी, reassurance them to stay brave, believe their story, don't blame the victim, keep an eye on the situation to make sure it is not getting too dangerous, ask about their immediate plans, report to the higher authority just like teachers, parents and police, respect their decisions. This is the very important. You must respect everyone's decisions, have reasons to keep the conversation going, and be careful that any action taken do not harm you or victim. Next slide. What do you do if you are being abused? Recognize the toxic behavior of the cycle of abuse. यानी वही रिपीटेशन हो रहा है, तो अपने को क्लिक होना चाहिए कि देयर इज समथिंग इज देयर इज सम, कुछ तो हो रहा है यार, कुछ तो गलत हो रहा है. तो अगर कोई फ्रेंड होगा, उसको भी चल रहा है, उसको भी पता है अरे यार इसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, बिकॉज शी इज नॉट फ्री, शी इज नॉट टॉकिंग जस्ट लाइक पहले जो जैसे टॉक कर रही थी वैसे नहीं हो रहा है, वो वैसे नहीं रह रही है. क्यों नहीं रह रही? एक बार पूछे आपने कभी? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड से ही पूछना चाहिए. व्हाई शी इज नॉट योर फ्रेंड? यू मस्ट why she is not just like your sister? Yes. So you must protect, recognize the toxic cycle of abuse, then protect yourself by leaving from the victimity of abuser, avoid the explanation and situation, report the incidents, keep the evidence of abuse by recording and photographing, plan the safety kit in sense you have to leave your home in the hurry. Then let the someone to trust about the abuse. Just like मैंने अभी बोला है कि जैसे फ्रेंड को बताना, जो आपके नेबर्स है, जो सही में आपके हित चाहते हैं, उनको बोलो. योर डॉक्टर्स, देन द पुलिस ऑफिसर. नेक्स्ट टाइम. स्पीक आउट. डोंट लेट द अब्यूजर रोब योर वॉइस. यही मैंने अभी बोला है कि अभी जो गया बीता हुआ कल मत देखो, जो अभी आने वाला कल है उसको देखो, आपका फ्यूचर देखो. जो भी है, सो जो भी एब्यूज हो रहा है अभी, उसको शांत रहने से नहीं होने वाला है. शांत रह के क्या होने वाला है? आप क्या उखाड़ लेने वाले हैं और कौन सा अच्छा होने वाला है? जो आपका लाइफ में जो भी चल रहा है वो तो चलने ही वाला है लाइफ लॉन्ग, मरते दम तक. लेकिन अगर उसको आप एक स्टेप लेते हो, तो जो भी एब्यूजर है उसका एक स्टेप रुक जाता है. तो डोंट लेट द एब्यूजर टू रोब यू ऑन योर वॉइस. क्लेमिंग योर वॉइस बैक इज डिफिकल्ट. यस, बिलीव योर वर्ड्स हैव पावर. स्पीकिंग अप, इट इज द फर्स्ट स्टेप, जो अभी मैंने बोला है, टू एंड द वॉर. अगर अपन ने स्टेप ही नहीं लिए तो अपने को कैसे पता चलेगा कि अपन बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपन बराबर है या नहीं है? मेरे साथ कोई है कि नहीं है? अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा, है ना? सो स्पीकिंग अप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंड वॉर. टेक अ स्टैंड बिकॉज योर एब्यूजर इज अफ्रेड ऑफ योर वॉइस. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. डोंट लेट देम ना अनदर जनरेशन ऑफ विक्टिम. जो अभी मैंने बोला है कि इट इज फॉर फ्यूचर जनरेशन. अभी जो गया है इसके तरफ नहीं देखना है अपने को. नाउ योर फ्यूचर इज वेरी गुड. यूर ऐसा नहीं होना चाहिए. फॉरेन में क्यों बच्चियां सेफ है? क्योंकि उनका जो भी है उनको बोलने का हक है, उनको ये है. वो बोलते हैं ना यार, फॉरेन के लड़कियां कितने स्मार्ट रहते हैं, कितने अच्छे रहते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर हैव फ्रीडम.
अपने बच्चों को क्यों फ्रीडम नहीं है? क्योंकि यही है कि क्योंकि सबको दबा के रखा है, फ्रीडम ही नहीं देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? सो डोंट लेट डाउन अनदर जनरेशन ऑफ victim. गिव द victim a platform to speak. Believe the victim. Don't blame the victim. Stand up for the justice. और कौन स्टैंड रहेगा? फ्रेंड्स, मदर, नेबर, पुलिस और एवरीवन। टीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट तो टीचर्स है। जो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगा तो प्लीज शेयर टू your teachers, because the first guardian in the school is teachers. Don't let the people forget that once someone commits abuse, they are prone to doing it again. अरे अपने को लगता है अरे यार ये एक बार ही कर रहा होगा ना, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं, देखना चाहिए कि उसने सेकंड टाइम भी कर रहा है क्या। अगर सेकंड टाइम कर रहा है तो यू मस्ट टेक स्टेप्स। नेक्स्ट स्लाइड। Safety using technology. Download and familiarizing yourself for the safety app. अभी तो इतना ज्यादा आपका मोबाइल फैड बढ़ गया है, ट्विटर, फेसबुक, जो भी अकाउंट है, कोई भी आके आपको ऐड द फ्रेंड करते हैं, अरे यार कितने सारे लाइक्स मिले। मुझे नहीं लगता लाइक्स पे लाइक्स आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो द स्पेशल फ्रेंड रहता है, आपका सही में फ्रेंड रहता है ना, वही गालियां देगा। देखो ये तेरा अच्छा नहीं चल रहा है, अभी पढ़ाई करो, बिकॉज द फ्यूचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डाउनलोड एंड फैमिलाइज योरसेल्फ अ सेफ्टी ऐप। तो ये बचने के लिए अभी कुछ जैसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को यानी बच्चियों को, तो ये एक सेफ्टी ऐप अपने गवर्नमेंट की तरफ से किया है। इसमें स्मार्ट शहर वुमन सेफ्टी शील्ड प्रोटेक्शन with you scream alarm, suspect rigidity, be safe, abhaya, a legal advice, and share your live location to those you trust. अगर किसी को डर लग रहा है तो शेयर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ तकलीफ होने तक ही तुमको प्रॉब्लम आना तक ही आपको प्रॉब्लम आना चाहिए, तभी तभी अपन शेयर करेंगे। जैसे अपन निकलते हैं तो आपका लाइव लोकेशन आपके फ्रेंड्स को या आपके मम्मी को या किसी को तो भी शेयर कर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं चाहिए कि अरे यार मम्मी स्पाइंग मी, वो ऐसे देख रही है यार, ऐसा नहीं है। मम्मी डैडी को आपके सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत फ्यूचर आपका ब्राइट होना चाहिए करके आपके मम्मी डैडी ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। उनको लगता है कि बच्ची सेफ जगह पहुंचनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, इसीलिए वो बोलते हैं। So share your live location, take a picture of taxi driver, license plate. In case of emergency, activate the location and app. Next slide. Yeah, the distress signal. It is a very important. आपने तो देखा ही होगा शॉर्ट वीडियोस में डिस्ट्रेस सिग्नल। तो अभी किसी को पता ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रेस सिग्नल बताना पड़ेगा, बट यू मस्ट दैट द पाम यू मस्ट मीन्स जो भी अंगूठा है वो अंदर रखना है और वो जो उंगली है तो आपको ऐसे ऐसे करना है। कि ऐसा नहीं चाहिए कि सामने विक्टिम खड़ा है और आप उनके सामने ही ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। यू मस्ट बैक, क्योंकि पीछे या कुछ ऐसा करके आपको ऐसे ऐसे करना है कि यू मस्ट कि दूसरों को पता होना चाहिए कि यू आर इन द डिस्ट्रेस। नेक्स्ट स्लाइड। इफ यू सी द डिस्ट्रेस सिग्नल, अगर किसी ने सिग्नल को देखा तो आपने क्या करना चाहिए? इफ यू सी द सिग्नल, चेक विद द पर्सनल सेफ्टी to find out what they need and what you can do. If you find or treat the danger, call the local police and helpline mentioned later. Next slide. Who to contact? अभी किसको आपको कांटेक्ट करना है? जैसे ये आप स्लाइड का फोटो निकाल के रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन द ऑल इंडिया वुमेन्स हेल्पलाइन डिस्ट्रेस में अगर है तो 1091। देन वुमेन्स डोमेस्टिक एब्यूज हेल्प का नंबर है 181। नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन्स का नंबर है दिस। दिल्ली कमिश्नर, देन आउटर दिल्ली हेल्पलाइन एंड लोकल बॉडीज।
द लोकल चैंपियन एनजीओस पुलिस स्टेशन जो भी है आपके जो भी है उसका एक नंबर आप सेव करके रखना चाहिए फॉर इमरजेंसी. यू मस्ट गिव एनीवन मिस कॉल करके एटलीस्ट बोलता है कि आई एम इन द प्रेशर, आई एम इन द मीन्स जो मुझे तकलीफ में है या मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ वो बताना. नेक्स्ट स्लाइड. स्कूल वालों ने जो भी है जो लोकल शेयर हेल्पलाइन नंबर है आप उनको बताना चाहिए कि दिस इज द लोकल शेयर नंबर है, आप कुछ भी प्रॉब्लम लगा तो प्लीज कॉल करो. बच्चों को यानी लड़कों और लड़कियों को दोनों को भी बताना पड़ेगा क्योंकि अगर लड़कों ने देखा है कि शी इज इन डिस्ट्रेस so he should call to the local body. Helpline for the specialized cases such like gender bias, violence, command crime, then domestic violence helpline, commission for the gender equality, crime stop, and the child line. These are the numbers you must note or click the photo or please ask the teachers to give it to you. Next slide. The reporting the process, report the incidents to the local police जैसे मैंने अभी बोला है special police unit, then record the statements for the police within the 24 hours. ऐसा नहीं होना अरे यार देखो अभी 2-4 दिन होने दो फिर इसके बाद जाए, ऐसा नहीं. अगर सही में प्रॉब्लम आ रहा है within the 24 hours you must go to hospital. अगर सही में किसी ने आपको जबरदस्ती की है then you must go to the hospital, shelter home for the medical examination by the female doctor. You must ask that I want female doctor so that she can help you better. Then the next slide. Yeah. So let's keep them that way. Girls are strong. So you must, you are the strong women's, future of future of our India also, bright India. So please फिर से मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड कि रजिस्ट्रेशन करो प्री स्टेज एंड पोस्ट स्टेज आपके लिए अच्छा है. फॉर प्लीज गिव द फीडबैक so that we give a certificate of that. Thank you. Next slide. Courageous together, say no to violence against women. Dheera together, let's speak together. Building a voice, our target is 1 lakh plus. So tweet, so add your courage to the voice and conversation. Thank you. Can I go for the next session or anyone कुछ chatting करना है, कुछ questions पूछने हैं कि next slide पे जाते हैं अपन. Next. That role of active bystander. किसी को पूछना है? सही में पूछिए. देखो दुनिया बहुत छोटी है. कभी मिलेंगे अपन. Tam, you know. Let's share the screen, madam. Shandar. Share the same role of active bystander. Thank you. Now the my next topic is role of active bystander. What is bystander? Bystander यानी वो देखने वाले, जो भी कुछ विक्टिम पे हो रहा है उसको अगर देख रहे हैं तो उसको bystander. ठीक है. Next slide. Please, as usual, registration. Please stage, post stage, feedback. Please teachers, please देखो ये करना चाहिए क्योंकि बच्चे जब तक फीडबैक नहीं देखेंगे भरेंगे तब तक हमको भी जोश नहीं आएगा कि
बाकी लोगों को भी सिखाना है, बाकी लोगों को भी करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड. या who is best? अभी जो मैंने अब बोला है, the individual who observe the act of violence, discrimination and other problematic behavior but are not in the direct restricted. Next slide. There are the two types of bystander, active and the passive. पैसिव यानी अपने जैसे, अरे यार फिर देखेंगे ना, उसको फोटो निकाल के रखेंगे, फिर उसके बीच में देखेंगे तो फिर अपने कोई ऊपर आएगा, फिर क्वेश्चन अपने कोई पूछेंगे. हाँ, तो दीज आर द पैसिव. दैट इज फियर ऑफ रिलेशन, ऑडियंस इनिबिशन, सोशल इन्फ्लुएंस. क्या होगा, कोई बोलेगा अरे तू बीच में क्यों बीच में पड़ा. तो these are the passive. But active who take a action, try to stop it. जो उसके साथ खड़ा रहेगा, यानी अगर फ्रेंड्स के साथ रहेगा तो फ्रेंड्स तो रहेगा ही, देन उसके लिए बोलेगा एंड उसके लिए एक्ट करेगा. नेक्स्ट स्लाइड. There are the 5 Ds, weapons of the active bystander. Next slide. First is the distract. जो अभी मैंने बोला, it is a suitable and the safe way to intervene. The aim is to interrupt and derail the incidents. Pretend to be lost, ask for the sometime or address of the place. Pretend you know the person being harassed. Talk something irrelevant and take the attention of the harasser. Next slide. Second is delay. Delaying can reduce the severity, जो अभी मैंने बोला है. Ask the victim if she is okay. Offer the accompany her to her the destination or the seat with her for a while. Next slide. Delegate. Delegation is when you ask for the assistance, for the resource or for the help from the third party. It is near a shop. If it is near the shop, then ask the shopkeeper or the bus. अगर बस के पास है तो को पैसेंजर, बस कंडक्टर, उनको बोलिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है. If you are in the school, then you must contact your teacher. As I say, it is the first guardian in the school. The first guardian is your teachers. Next slide. Document. File the assess the situation. If anyone helping the person being harassed. If not, use one of the other D. If someone else is ready helping or assess your own safety. ठीक है, ऐसा नहीं बहुत जन उसको अगर सही में प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन आप अकेले हो, अकेले कुछ नहीं कर सकते. यू मस्ट कॉल हेल्प. सेफ्टी के लिए आप पहले कॉल करो, उसके बाद ही आप उसको हेल्प करने के जाओ, क्योंकि आपके लिए भी तो हेल्प करने के लिए कोई आना चाहिए. if you are safe, then you go ahead and start recording. Always ask the person who is harassed what they want to do with the recording. उसको पूछना चाहिए कि देखो मैंने तो रिकॉर्ड किया है, ये मैंने सोशल पे डालना है कि नहीं डालना है, देखो. अगर शी वांट्स दैट नहीं, ये कुछ नहीं करना है, ये मेरे पास ही चाहिए, तो यू मस्ट गिव टू हर. ये देख, ये तेरा पर्सनल मामला है, ये तू अपने पास रख, बट यू मस्ट टेक केयर ऑफ. नेक्स्ट स्लाइड. जो मैंने अभी बोला है, नेवर पोस्ट इट ऑनलाइन using the image or footage of the person being victim without the person consent may make the person feel even more depressed, can lead to the level of visibility that the person may not want. Publishing another person's traumatic experience is no way to the effective bystander. This is very important. Next slide. Direct. The fifth is direct. Directly respond to the harassment by naming what is happening or the concern of the harasser. This can be risky to the harasser. May redirect their abuse towards you. It may elicit the situation. Be clear, confident, but cautious. Next slide.
The golden rule, only the interview if it is safe for you to do so. If not safe, call the police or the child helpline. That is 1098 is very important number. Dial 100 or 1098. You must बस दिमाग में डाल दो 1098 if anyone wants help. Next slide. More way to get involved. Organize action like writing, stories, poster, and nukkad natak. Then, if you know someone organizing is working for it, donate your time and idea. अगर किसी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि देखो ये भी लिखना ये अच्छा है, ये दूसरों के लिए हेल्प हो सकता है, बताना चाहिए. Appreciate someone practicing and bystander information. Next slide. The wrong thing to say. Why did she go at night? ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए ना. अपन जा सकते हैं रात में, तो लड़कियां क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज दे आर नॉट सेफ. अगर आपने सेफ्टी के लिए अच्छा करेंगे अपनी बहनों के लिए, तो दे आर ऑल्सो गो फॉर नाइट. दे आर ऑल्सो जो भी कर सकती है वो कर सकती है. तो यही है कि रॉन्ग थिंग ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि व्हाई डिड शी गो एट नाइट, जो अपन हमेशा बोलते हैं. मीन्स एक लड़की लड़की के लिए बोलती है, ऐसे नहीं है कि लड़के का कुछ प्रॉब्लम है. लड़कों का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता. सही में मैं बोल रही हूँ. द वुमन्स इज अगेंस्ट वुमन्स, ऐसे ही लग रहा है. सो प्लीज हेल्प हर. Why did go means why did she park her scooter here? Why did she go alone? Why she didn't call? means उसने अपने बहन को क्यों कॉल किया? उसने पुलिस को कॉल करना चाहिए. सो नेवर ब्लेम द विक्टिम, नेवर. नेक्स्ट स्लाइड. क्योंकि वो कौन से टेंशन में रहते हैं आपको नहीं पता. सो जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगी. जिसको वो फोन करना चाहती है वो कर सकती है. जहां भी वो कर सकती है वो कर सकती है. लेकिन अपन नहीं पता है कि वो कौन से टेंशन में थी, वो कौन से स्ट्रेस में थी या कौन से सिचुएशन में थी. सो इसने ये ऐसा एक्ट किया. सो अगेन registration and details posted and feedback certificate is awarded to the participant. Please teachers help them to this. Thank you. I'm myself Dr. Shwetal Bandawar from Chandrapur district, district Chandrapur from Maharashtra, COGS से मैं बात कर रही हूँ. I am in the तालुका place, सिंधेवाही. ओके मैम, एनी क्वेश्चन? अरे अच्छा लगा कि नहीं? अरे सब जन शांत है, सबको पता चलेगा नहीं, किसी को पता नहीं है, मीन्स किसी के दिमाग में नहीं गया होगा. Okay, Veera ma'am, I will hand it to you. Okay, thank you, Dr. Shwetal. Thank you. Sriman, please put my slide. Okay, sure. Kids, जैसे डॉक्टर श्वेतल और डॉक्टर रिद्धि ने आप लोगों को आप लोगों से बात करी. एंड हमारा जो धीरा प्रोजेक्ट है, that this is an online certificate course. This is initiated by Foxy, President Dr. Shanta Kumari's vision for making you all the जो violence against women हो रहा है, उसके लिए आप लोगों को सेंसिटाइज करना है कि इन सिचुएशंस में हम कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं इनमें. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रिजिंग द जेंडर डिवाइड. अब
जेंडर आपको सब लोगों को मालूम है, यू आर ग्रोन अप, कि 3 तरह के जेंडर्स हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर. सो आप मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल है ना. न्यूट्रल इज लाइक अ पेन. तो अब हम ये फर्स्ट स्लाइड प्लीज पुट श्रीमन, फर्स्ट स्लाइड. हाँ, फॉर बिफोर दैट हमको एज ऑलरेडी बीन रिपीटेडली सेड कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एंड फीडबैक जो आपको सब अटेंड करने के बाद मिलेगा, देन वो भरना बहुत जरूरी है. फिल दैट फॉर्म. सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड टू पार्टिसिपेंट्स ऑन कोर्स अटेंडेंस एंड सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. आपने जो प्री टेस्ट करा है, पोस्ट टेस्ट करा है एंड फीडबैक. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide. Now, the first, whom do you identify with these names? कुछ नाम है, शिवा, हर्षा, कशिश, नयन, निहार, निर्मल, गुंजन. तो इससे आप तुरंत लगा लेते हो कि हर्षा है तो फीमेल होगी, निर्मल है तो मेल होगा, नयन, शिवा ये मेल होंगे, गुंजन फीमेल होगी. अगेन, तो जेंडर्स आर नथिंग बट सोशली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट्स हैं. ये हमारी सोसाइटी ने कुछ ऐसे आइडियाज फॉर्म कर दिए हैं, कंसेप्ट फॉर्म कर दिए हैं, जो कि बराबर कंसेप्ट चले आ रहे हैं. उसी से हम प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम ये नामों से जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. Do these traits characterize male or female? अब ये जो कुछ वो दिए ट्रेड्स, लाइक एक्टिव होगा तो मतलब मेल फीमेल दोनों ही एक्टिव हो सकते हैं, पर अपन कह देते हैं कि बहुत एग्रेसिव है, बहुत मतलब लीडर क्वालिटी है, या कह देते हैं मैकेनिकल बहुत है, माशो है. तो मतलब मेल कैरेक्टर्स से इसको हम लोग वो कर लेते हैं. और जरा थोड़ी सी सबमिसिव टाइप की होगी, इंडिपेंडेंट कहते हैं मेल होगा अगेन. एंड आर्टिस्टिक हो, ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, ज्यादा पढ़ाकू हो, तो मतलब इमोशनल ज्यादा हो, तो हम कहते हैं जेंटल हो अगर, तो कहते हैं दीज आर फीमेल्स. तो दीज कैरेक्टर ट्रेड्स अगेन सोसाइटी ने ही इनको नाम दे दिए हैं, जबकि ये एनी मेल और फीमेल एनी वन कैन हैव दीज कैरेक्टर्स. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, please. Yes. Now we are coming to conditioning of gender stereotypes. Stereotypes again, हम एक हमारी जो exaggerated opinion बना लेते हैं. That I have already told you कि stereotypes are so ingrained in our culture that they become a habitual response. हमारे कल्चर में इतने समय से चले आ रहे हैं ना कि वो एक हैबिचुअल रिस्पॉन्स हमारी, जैसे अभी हमने कहा कि ये एग्रेसिव होगा तो मेल होगा, ये हैबिचुअल रिस्पॉन्स हो गया हमारे. मीडिया एंड फिल्म्स रिवॉर्ड वायलेंट मेल बिहेवियर. मीडिया भी इसमें बहुत इन चीजों को बढ़ाती है. पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू यूज फिजिकल पनिशमेंट विद सन्स देन विद द डॉटर्स. पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू टॉलरेट वायलेंट बिहेवियर इन बॉयज देन इन गर्ल्स. सी, ये कहाँ से पेरेंट्स भी ही इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं. लड़कों का तो वो समझते हैं कि फिजिकल उनको पनिशमेंट दे सकते हैं उनको, और उनका टॉलरेट चलो होता है वायलेंट बिहेवियर. लड़कियों से उम्मीदें नहीं करी जाती. व्हेन गर्ल्स शो एग्रेसिव ओपिनियंस और लीडरशिप, दे आर नोन एज बॉसी. अरे वो तो बॉसी है, रादर देन रिस्पॉन्सिबल. स्टीरियोटिपिकल रूल्स रेस्ट्रिक्ट पर्सनल चॉइस, foster sexism and create unequal outcomes. तो ये क्या कर रहे हैं, they are these stereotypical जो हमने आइडियाज सेट कर लिए हैं, वो एनकरेज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स. अभी हमने जिन चीजों की बात करी है, दे फॉस्टर सेक्सिज्म, है ना. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. इज जेंडर बायस अ सोशल इविल? क्या हम प्रेफरेंस जो देते हैं ओवर वन जेंडर ओवर अनदर जेंडर एक सोशल इविल है? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ सोशल इविल. इन इंडियन सोसाइटी वुमेन आर ऑप्रेस्ड ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली. डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स यंग. पैदा होने से ही डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के अंदर भी ये इनग्रेन्ड हो गया है, अपने कल्चर में ऐसा हो गया है कि वो डिस्क्रिमिनेशन पैदाइशी से ही चालू हो जाता है.
when discrimination starts young, when girls are expected to do household chores, male babies are preferred over female babies. ये तो हो गया पेरेंट्स की तरफ से कि उनको बच्चे पैदा हो गए तो उन्हें अपना काम अपने घर के काम देखना चाहिए, बच्चे देखना चाहिए. मेल बेबीज को वो लोग प्रेफर करते हैं ओवर फीमेल. वर्क प्लेस में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क कॉजेस प्रेग्नेंट वुमेन टू बी फायर्ड. मैसिव वेज गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन. आपने देखा वर्क प्लेस पे भी कि मैन को ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, वुमेन को कम मिल रहा है. धीरे धीरे ये अब नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, पर स्टिल बहुत लंबा समय लगेगा टू ब्रिजिंग दिस गैप एट वर्क प्लेस. No woman is safe from sexual harassment, such as eve teasing and catcalling. And women are called goddess, but even the tiniest of mistake on their behalf makes them unworthy of being respected. हम वुमेन को और तो मानते हैं, लक्ष्मी है, सरस्वती है, देवी माँ की पूजा करते हैं, नौ दुर्गा में 9 दिन पूजा भी करते हैं, पर जरा सी गलती जब होती है तो उसको आप देखो घरों में so many women at home they are not respected at all. So what's the point? हमें भगवान नहीं, वुमेन को भगवान नहीं बनना है. Treat her equal. Women do not want to be treated like goddess. Women want to be treated like humans. उनको आदमी समझो, उन्हें अपने बराबर का हक दो. Next slide. And next slide. It is not a level playing field. ये है ना, एक इक्वल वर्ल्ड नहीं है. यहाँ पे जेंडर गैप है, मौजूद है. Some countries still don't give women voting rights. इंडिया में वोटिंग राइट है वुमेन के पास, पर सब कुछ कंट्रीज हैं they don't have voting rights. Women still don't have equal access to education. पढ़ाई लिखाई भी 6th क्लास 8th क्लास तक पढ़ लिया, 10th तक पढ़ लिया. बहुत सारे घर हैं रूरल एरियाज में, चले जाइए जहाँ की उनको आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है. आप ज्यादा पढ़ लोगे तो आपकी शादी में दिक्कत आएगी. वहां उनकी सोच ये होती है. Child marriages and dowry are prevalent. Women are not given opportunities at work. One man's voice is worth more than that of many women. उतनी आजादी नहीं होती है. और अपने पॉलिटिक्स में हो चाहे लीडरशिप में हो, वुमेन do not have enough representation. So it is not a level playing field. Next slide. All the genders have to work together as allies. मतलब ये है कि हम सबको एक साथ मिलके काम करना है. हमें to create a gender neutral, gender responsive and equal society. We all have to work together कि हम मेल फीमेल से डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, जेंडर रिस्पॉन्सिव हो, लेट एवरीवन बी रिस्पॉन्सिबल एंड इक्वल सोसाइटी क्रिएट करें. We have to eliminate gender inequality and gender bias. Gender bias जो हमने एक प्रीफॉर्म्ड हमारे थॉट्स है, हमको उससे भी बाहर निकल के आना पड़ेगा. ये काम मेल कर सकता है, ये काम फीमेल नहीं कर सकती. देखिए अब females have also shown their capability. उन्होंने नासा तक gender-based prejudice is not an issue of one gender. Next slide. मैडम, in the middle of the topic, आपका वॉइस बीच में कट हो जा रहा है मैडम. वो पार कर
बहुत चल रहा है हमारी तरफ से. Now can you hear? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Okay. So do you want me to repeat the slide? Okay. So it is not enough to commit violence. It is not enough to not commit violence. सिर्फ violence नहीं करें, आपसे हम बहुत कुछ भी उम्मीद करते हैं. You must be willing to take 8 active steps to ensure no other man commits such violence. आप सिर्फ हम उम्मीद ये नहीं करते कि आप वायलेंस करें, नहीं, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप 8 स्टेप्स जो बताएंगे वो भी करें. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. शेयर द केयर. Women take 3 times more unpaid care and domestic work than men. आपने देखा हैगा वुमेन काम करती घर पे भी और 3 गुना अनपेड केयर करती हैं. वुमेन स्पेंड एनर्जी एंड इमोशनल लेबर एट होम. वो एनर्जी भी अपनी लगा रही हैं, अपना इमोशनल लेबर भी लगा रही है, सब कुछ वो घर के लिए अपना दे रही हैं. They spend emotional labor at home with family instead of advancing career or looking after themselves. वो कितना अपना सेक्रीफाइस करती हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए. समटाइम्स बहुत सारे एग्जांपल है कि पीएचडी होके भी वो लड़कियां घर पे बैठी रह जाती है कि बच्चों को रेज करना है, परिवार को देखना है. कोई भी मदर इन लॉ अगर बीमार है तो वो हस्बैंड चाहता है भाई तुम घर पे रह के देखभाल करो, तो दे सेक्रीफाइस देयर करियर. Appreciate those who help you unconditionally. Respect the sacrifices being made for you. Offer to help whatever you can. मतलब आपसे उम्मीद है कि आप अप्रिशिएट करिए, वो आपके लिए काम कर रही है, वो क्या सेक्रीफाइसेस कर रही है, आप उसके लिए ऑफर हेल्प. एनकरेज वुमेन टू टेक अप देयर ओन इंटरेस्ट. आप मतलब these males have to encourage them to take their own interest. Next slide. Hold yourself accountable. Boys will be held accountable. आपसे क्या उम्मीद है? Respect men and women equally. Be aware of your own behavior. आप अपने खुद का behavior भी देखिए. Make sure you are open to criticism. आप में भी गलतियां होती हैं, आप भी गलत हो सकते हो, तो make sure you are open to criticism. Change yourself when you see toxicity. अगर आपको लगता है आपका behavior toxic हो रहा है, toxic in any sense, आप अपने wife से, आप अपने बच्चों से you are not talking to them properly, आप उन पर abusive हो रहे हैं, तो आप change yourself when you see toxicity. Next slide. Change notions of traditional masculinity. Notions means ideas. Change notions of traditional masculinity. Example, man up, don't cry, be strong. ऐसे कहते हैं ना, अरे आदमी रोते नहीं है, don't cry, be strong. ऐसा नहीं है. Even males have emotions. Treat everyone the same way regardless of gender. जो ये जेंडर बायस है, जो स्टीरियोटाइपिंग है, दिस हैज टू बी ब्रोकन. ये ब्रिज करना हमको, ये गैप जो जेंडर डिवाइड करा गया है, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिजिंग द गैप. तो ये चालू होता है बिकॉज यू आर चिल्ड्रन. आपका माइंड अभी ऐसा है कि हम आपको मोल्ड कर सकते हैं, आपको हम इसीलिए वी आर डायरेक्टिंग दिस 9th and 12th स्टूडेंट्स को. आप आगे you are going to be respectful citizens, responsible citizens. तो इस एज से आपके माइंडसेट को हम चेंज करें. Change the notions of the traditional masculinity. Emotions सबके हैं. Treat everyone the same way regardless of gender. Allow yourself the freedom to break norms and challenge stereotypes. Question those that do not allow you to challenge stereotypes. Do not excuse men just because they are men. Make the sensible, fashionable, not the alpha male. एक अफलातून मेल नहीं हो आप, है ना, sensible मेल हो. Next slide. Next slide.
So आपको you have to change. Sensitive men will change the next generation. अब बहुत सारी उम्मीदें हमें men से है, because they can change the next generation. Men cry, men also break down, men get anxiety, men have also emotions, they also feel insecure, men get abused, उनको भी abuse करा जाता है, men have mental illness also, and it is not unmanly to struggle. Let's support men, let's encourage men, don't belittle or silence men. Men struggle too. हम फीमेल की बात कर रहे थे, violence against the female, violence क्या क्या होता है, हम अब मेल की भी बात कर रहे हैं. ये बच्चे जो मेल जेंडर है, क्योंकि उनमें भी उनको भी सेंसिटिव है वो लोग. तो स्टीरियोटाइप नहीं करें, जेंडर बायस नहीं हो. मेल्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके भी इमोशंस हैं, वो भी इनसिक्योर फील करते हैं, उनको भी लगता है कोई इनको सपोर्ट करे. तो अनमैनली नहीं है स्ट्रगल्स, है ना. तो लेट्स encouragement and man can change the next generation. Sensitive man will change the next generation. Next slide. Next slide, please, Sriman. So respect others' choices. When some होगा शायद. डू नॉट जज शेम देम फॉर देयर चॉइसेस. वो जो कुछ अपने लिए कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने लिए सोचा है, डू नॉट जज देम फॉर देयर चॉइसेस. दे आर फ्री टू हैव देयर ओन थिंकिंग and respect others' choices. Next slide. Understand consent. Consent means हाँ, अगर कोई हाँ करे, कोई कंसेंट दे, तभी आप समझिए कि उसकी हाँ है. उसका कंसेंट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड कंसेंट जो है, दैट इज फ्रीली गिवन, रिवर्सिबल भी हो सकती है, इन्फॉर्म्ड, आप उसको बताएं तब कंसेंट मानी जाएगी. एंथुसियास्टिक होने चाहिए, उसकी हाँ होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए. इस वाले काम के लिए कंसेंट दी है. एंड आर फ्रेजेस सच एज हंसी तो फंसी. ये हंसी तो फंसी, दिस इज नॉट कंसेंट, है ना. क्लियर कंसेंट इज यस, नथिंग एल्स. अगर वो यस कहे, देन ओनली इट इज कंसेंट. हेलो, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है. हेलो, कैन आई कंटिन्यू? हेलो हेलो. हाँ, ये डिस्टर्बेंस हो रहा था थोड़ा. कंटिन्यू करूं मैं? यस मैडम. अच्छा, हाँ. तो अंडरस्टैंड कंसेंट, क्लियर द कंसेंट वर्ड यस, नथिंग एल्स. यस होगा तभी वो माना जाएगा. शी वाज आस्किंग फॉर इट. नहीं, ऐसा नहीं. वो व्हाई कुडंट यू? बॉयज विल बी बॉयज इज नेवर एक्सेप्टेबल. नेवर विक्टिम ब्लेम. नेक्स्ट. So the consent has to be specific. Call out sexism and harassment. Sexism, see it, name it, stop it. Stop sexism. All women experience sexual harassment at least once in their lifetime. आपने देखा होगा, sexual harassment हर किसी woman ने face करा है. All women experience sexism once a week. हर हफ्ते भी हो सकता है, ये हर दिन भी हो सकता है. Call out such behavior in a safe, respectful manner. इनके बारे में safe, respectful manner में बात करिए. Be an active bystander. आप कोशिश करिए कि उसमें आप अपना रोल अदा कर सकें. Do not excuse friends, relatives or co-workers. आपका भले ही वो फ्रेंड क्यों नहीं हो, आपका कोई रिलेटिव ही नहीं हो, co-worker क्यों नहीं हो, but you have to call out for such behavior in a safe, respectful manner. आपको बात करनी पड़ेगी उससे थोड़े ढंग से, रिस्पेक्टफुल मैनर पे, कि इस तरह से नहीं करा जाता. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, please. Challenge gender stereotyping.
अब आप कहेंगे क्वेश्चन योर ओन स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिस. आप तो कहीं स्टीरियोटाइपिंग नहीं कर रहे, क्वेश्चन योरसेल्फ आल्सो. Challenge any stereotypical notions of gender, like women are not good at driving. आप देखो हमेशा कहते होंगे कि ये this is stereotyping. कोई फीमेल ड्राइव करी होगी तो एकदम झटके से रोक लिया, अरे women are not good at driving. ये हमेशा ये रिमार्क हो जाता है. तो we have to change this. Counter the argument with facts. आपको हो सकता है कई आर्ग्यूमेंट दे के इन फैक्ट्स को स्टैब्लिश करना पड़े. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, please. Believe survivors. Every time a woman speaks up about her experiences and she is not believed, toxic culture flourishes. हम कहते हैं, हम बार बार कह रहे हैं speak up, बोलो, आपके साथ कुछ भी गलत हो तो बोलो. पर जब भी she tries to speak up about her experience, तो कई बार लोग बात सुनते नहीं हैं. This is a toxic culture. Madam, we can't hear you, ma'am. Suffer, है ना? तो listen carefully, believe her and support her. आपको बहुत केयरफुली उसकी बात सुननी चाहिए, बिकॉज वो सफरर है, इमोशनल उसके साथ चेंज में है, बहुत ज्यादा हर्ट है. तो आपको यू हैव टू हियर, उसकी बिलीव करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा. बी अ फ्रेंड और अनकंडीशनल सपोर्ट देना है. डोंट ब्लेम. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. चेंज द डायलॉग, है ना? We have to change the dialogue. We have to say बदलनी पड़ेगी कि women should stay at home, women should do this, women should do not to do this. So women should stay at home, women should not work, women should be seen and not heard. ये dialogues change करने पड़ेंगे. Stop going to just show these. How can you change the narrative? Make a gender neutral society. Next slide. Next slide. So we can do anything, be anything. हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करने के काबिल हैं. ये हमने प्रूव करा है. तो being, कहने का मतलब है being together, being strong together, together we can build a good nation. तो हमको अपनी कल्चरल नॉर्म्स को अटैक करना पड़ेगा. वी हैव टू ब्रिज द गैप. हमको ये जो मेल और फीमेल जेंडर के बीच का जो गैप है, वी हैव टू ब्रेक दैट. जैसे कि देखिए ना, कुछ थॉट हैज नो जेंडर, द सोल हैज नो जेंडर. कुछ भी ये मतलब व्हेन थॉट सबके. Madam, we can't hear you, ma'am. In the end, Sriman, please next slide. In the end, I would say कि again, please register pre-test, post-test and feedback, because certificate will only be awarded after you have completed the post-test and feedback. Pre-test, all the three tests, pre-test, post-test and feedback, and then you will have the certificate. So next slide. Do we have any? Next slide. Courageous together, say no to violence against women. That is VAW, violence against women. Say no to that. And hashtag Dheera together. Let's tweet together. Building a voice. Our target is 100,000 people ke tweets. Building a voice, our target. Add your courageous voice to this conversation. Thank you. Do we continue with the next? Peer pressure. Simran or Smiran? Sriman, sorry.
Hello. Visible, madam? Yes, can I continue? Yes, ma'am. Okay. So children, we talked about bridging the gap. Now we are coming to decoding peer pressure. This is again a Dheera initiative. So next slide, please. Peer pressure, you already know, you are all, you have influence of your fellow friends. So you try to, any influence that peers have on each other to conform to behaviors and personal habits of the group. You know? Most of the time, peer pressure is too subtle to identify, but has enormous effect. So types of peer pressure can be, ये types of peer pressure लगा दो, ये slide को, हाँ, peer pressure वाला, हाँ, decoding peer pressure, yes. Our main highlights: identifying a toxic environment, the concept of good versus bad touch, the concept of consent, and fourth is the power of no. Next. Registration, again, registration and pre-test, post-test and feedbacks are very, very necessary. Only then certificate will be given. So please, please do this, fill the forms. Next slide. What is peer pressure? As I already told you, it can be any influence that peers have on each other. आपके friends का जो आप pressure रहता है, that is peer pressure. Any influence that peers have on each other to conform to behaviors and personal habits of a group. Most of the time, peer pressure is too subtle to identify, but it has enormous effect. Next slide. टाइप्स ऑफ पीयर प्रेशर. अब पीयर प्रेशर भी बहुत तरह के होते हैं. कई बार स्पोकन हो सकते हैं, बोल के आपको कोई परसुएट कर रहा है ये काम ऐसे करो. अनस्पोकन हो सकते हैं, जबकि है ना वन पीयर इज परसुएटेड बाय एक्सपोजर टू बिहेवियर, दूसरा दिखा रहा है अनस्पोकन है, तो आप कई बार बार वो देखते हो तो आपके ऊपर अनस्पोकन प्रेशर पड़ता है. डायरेक्ट वन पीयर हैज टू मेक एन ऑन स्पॉट डिसीजन, हैंडिंग ओवर सिगरेट. ये यूजुअली देखा गया, ये पीयर प्रेशर बहुत होता है. सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, इस टाइप के पीयर प्रेशर होते हैं. हंसते हैं लड़के, अरे तू ऐसा नहीं करता है, तो दिस इज नॉट हेल्दी. इनडायरेक्ट, व्हेन अ पीयर ओवरहियर्स another gossiping and changes behavior due to indirect pressure. आपके बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई आपकी हंसी उड़ा रहा है, तो आपके पास आपके ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ता है. आप you overhear and then it is a pressure to you. Negative, when a peer is pressured into behavior that is against a moral code. ये negative pressure कहलाता है, because you are not liking that habit, but still pressurized हो. So this is creating a negative pressure on you, peer pressure. Positive, when a peer is influenced by behavior that is healthy and responsible. Positive peer pressure वो होगा जिसपे आपकी growth होती है, आपकी healthy, आपका behavior is good. So that is a positive peer pressure. So always try to find out what is good for you, what is healthy and responsible for you, that makes you responsible. Next. साइंस ऑफ अ टॉक्सिक एनवायरमेंट. अब हाउ टू फाइंड आउट कि ये एनवायरमेंट मेरे लिए टॉक्सिक है, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर मी. योर फ्रेंड्स मेक यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ, है ना. योर फ्रेंडशिप इज ऑन देयर टर्म्स, उनकी शर्तों पे आप फ्रेंडशिप करो, ऐसा नहीं है. यू आर नेवर श्योर वेयर यू स्टैंड. आपको उनके साथ रहते हो तो आपको पता ही नहीं आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. Gossip is constant about friends. एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं. Effort is one sided. आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं. They don't respect your boundaries. आपने कुछ बाउंड्री सेट कर रखी, मैं रात में नहीं जाती हूँ, मैं शाम के 5 बजे 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती हूँ. तो आपको वो प्रेशर करते हैं, आपकी बात को नहीं समझते. This means they don't respect your boundaries. You feel pressure to do things you don't want to do.
आप है ना जो काम नहीं करना चाहते उसके लिए वो प्रेशराइज कर रहे हैं. देयर इज अ कंपटीशन टू बी पॉपुलर. अरे इसी तरह से पॉपुलर होते हैं अगर सिगरेट पीते हैं, या फिर आप फ्रेंड्स में के बीच में पॉपुलर हो गए, आप ड्रिंक करोगे, सिगरेट पियोगे. सो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव एनवायरमेंट. दिस इज टॉक्सिक फॉर यू. यू आर टेरिफाइड वन मिस्टेक कुड मेक देम लीव यू. इसलिए आप है ना डरते हो कि भाई अगर आप नहीं करोगे तो वो हम मुझे छोड़ देंगे. दे एनकरेज योर वर्स्ट ट्रेड्स. हम सब में वर्स्ट ट्रेड्स होती है, हम गंदा बिहेवियर करने की सब में वो होती है कि हो सकता है कि हम नेगेटिव की तरफ चले जाएं. तो उनको, आपके फ्रेंड्स को, दे शुड नॉट एनकरेज योर वर्स्ट ट्रेड्स. आपका अगर वो वर्स्ट ट्रेड्स बढ़ाते हैं तो दैट इज टॉक्सिक. हाउ टू अवॉइड अनकंफर्टेबल सिचुएशंस. उनको कैसे अवॉइड करें? अवॉइड गोइंग आउट विद द स्ट्रेंजर. Make sure your parents, siblings are aware of whereabouts. Take a phone with you. Respect other people's boundaries. Draw boundaries. Be confident to say no to anything that you are not comfortable with. Dial the police number 100 if you feel sense of danger. तो आप अपने टर्म्स पे रहो. आप तो स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाओ. आप बाउंड्रीज अपनी सेट करो. आप पुलिस नंबर 100 आपके पास है. जब भी आपको लगता है तो आप पुलिस को कॉल करो और नो कहना सीखो. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, please. हाँ, तो learning to differentiate toxic people is the first step to cleansing toxicity. आप कैसे toxicity को cleanse करोगे कि आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से toxic people हैं. Boys to avoid में होता है avoid boys who are against feminism. Boys who are rude to their mothers. मतलब ये आपको find out करना है कि इस तरह के boys तो नहीं है, उनकी फ्रेंडशिप मत करिए. बॉयज हु डोंट रिस्पेक्ट योर फिजिकल बाउंड्रीज, बॉयज हु स्टार्ट फाइट्स, बॉयज यू यूज स्लर्स लाइक वर्ड्स एंड मतलब उस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं. बॉयज हु कमेंट ऑन अ गर्ल्स अपीयरेंस विदाउट आस्किंग फॉर ओपिनियन. अब किसी ने पूछा भी नहीं है बट दे आर पासिंग कमेंट्स ऑन द गर्ल्स. बॉयज हु मेक रेप जोक्स, गंदे जोक्स, रेप, उस तरह की बातें जो करते हैं. एंड कौन सी गर्ल्स को अवॉइड करना है? गर्ल्स हु थिंक इट इज अनमैनली टू क्राई, गर्ल्स हु हिट और स्लैप देयर बॉयफ्रेंड्स, गर्ल्स हु आर टोटली materialistic, girls who out other girls which carry दूसरों को, girls who don't respect your physical boundaries, girls who call you girl thinking it is an insult. Hey girl, मतलब this sort of insult, you know. Girls who don't think man can be victims of the abuse and rape. So you have to avoid these kinds of people. Next slide. Learn to put yourself first. Set boundaries you are comfortable. तो इसलिए टॉक्सिक एनवायरमेंट तो आपने यू हैव रिकॉग्नाइज्ड, बट यू हैव टू सेट बाउंड्रीज. आप अपने लिए भी कंफर्टेबल हो वो बाउंड्री सेट करिए. I will end the phone call if कुछ इस तरह की बात या चिल्ला रहा है दूसरी तरफ, तो I will end that phone call. I can stay for away from for half an hour. मैं आधे घंटे तक बात नहीं करूंगी, है ना. Thank you for your offer. Unfortunately, I can't make it. आपको ये कहना आना चाहिए कि किसी के साथ नहीं जाना. Thank you for your offer. I can't go with you. I am not comfortable discussing this. ये कहना सीखिए. Please do not discuss with me. ये I need time to. आप ये भी कह सकते हो बड़े politely. I need time to think about it. I will come back to you. I don't respond to work emails at the weekend. आप ये सब कहना आना चाहिए. I am not comfortable with that. If you do it again, I will have to leave. आप अपने फ्रेंड से कहिए I am not comfortable. अगर ऐसा करोगे तो I will leave you. I respect your opinion, but this is my life and this is my opinion. अगर मैंने बाउंड्री सेट करी है तो this is my life. I am happy with my decisions. Next slide. Next slide. Good touch versus the bad touch. We have shown you peers reserve the feel like all
touch जो touch behavior है, this is really good slide which should be shown to little children also कि good touch क्या होता है, bad touch क्या होता है. और जब भी आपको लगता है कि you feel uncomfortable, you speak out. And bad touch वाला जो है, आप देख सकते हैं जो greenish और yellow है, आप no, the red ones are the bad touch. जो एरिया बता रखे हैं रेड रेड जोन्स हैं मेल और फीमेल दोनों में, है ना. चेस्ट वाला हो गया एंड पेल्विस वाला रीजन हो गया. सो दीज आर द बैड टचेस. आप तुरंत यू विल रिपोर्ट इट टू समवन जिसके ऊपर आपको फेथ है. एंड गुड टच कैन बी आपको हेड पे कोई हाथ रखे तो ठीक है, पेरेंट्स भी करते हैं हाथ रख के. एंड बैड टच में नेक एंड शोल्डर्स भी आ सकता है, इधर आप मतलब टूवर्ड्स योर चेस्ट कोई हाथ लगाए, दैट इज मे यू मे नॉट लाइक इट, है ना. सो नेक्स्ट स्लाइड. द कंसेंट पहले भी बताया, इट इज द परमिशन फॉर डूइंग एनीथिंग. कुछ भी करना है उसके पहले परमिशन लेना जरूरी है. ऑलवेज आस्क फॉर कंसेंट, है ना. डू नॉट एज्यूम कंसेंट. ये मान के मत चलो कि उसने कंसेंट दे दी, हंस दी तो उसका मतलब उसने कंसेंट दे दी है. नो, जब तक यस नहीं करे दैट इज नॉट नो, मतलब इट इज नॉट अ कंसेंट. रिस्पेक्ट द कंसेंट ऑफ अदर्स. आप किसी ने नो कहा है तो रिस्पेक्ट इट. नेवर कोर्स कंसेंट, मतलब कभी फोर्स नहीं करो. ओनली एक्सेप्ट यस. अगर उसने मन से यस करा है तो शी हैज गिवन कंसेंट. So no means no. Anytime she turns away, I don't want to do this, and shoving you away, leave me alone, and I'm not ready, pushing you away. These means no. I don't like it. Do away from me. और cry करने लग जाए, screaming. That means she is saying no. So don't do it. Yes means only one thing. एक ही बात है yes. अगर yes का है, so that means she is giving. Formally, she is giving consent. Next slide. Stand up to peer pressure. तो आपके दोस्त लोग जो आप पे प्रेशर बनाते हैं, knowingly और unknowingly, है ना, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो you have to stand up to peer pressure. Just say no, no, na, है ना. Leave the scene and say see you later. आप politely कह दो see you later. Make up an excuse like, I just remembered I have to do something. या कुछ I have to talk to someone. Be at such place. है ना. I have to run. ठीक है. Use humor like, if my parents found out, they would lock me in my room for 30 years and I'd be forced to eat bagan and broccoli. But this is a humorous way of saying. Huh? You have to change the subject. Oh, hey, I almost forgot to tell you about something like that. है ना. कुछ और दूसरी बात करने लग जाओ. Suggest a better idea like, let's go and check out this instead. है ना. Yeah, let's go out to canteen. But suggest a better idea and topic से अलग हो जाओ. Remember to always listen to your gut instinct. आप gut instinct कहते हैं आपके अंदर की जो आवाज है उसको आप सुनो. एंड आप gut instinct is always right. इसलिए होती है क्योंकि जिस तरह से आपकी ग्रूमिंग हुई है, आपके पेरेंट्स ने आपको जो चीजें सिखाई हैं वो आपके अंदर मस्तिष्क में बैठी हुई हैं, वो आपको गाइड करती हैं कि दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड. सो आप remember to always listen to your gut instinct. Don't say maybe if you want to say no. Okay, next slide. So we dreaming of a better future for our generations. We all are dreaming for your better future. Next slide. जिससे कि हमारी future generations अच्छी बने. And Malala said, I want every girl to know that her voice can change the world. बच्चों, you have read about Malala. पाकिस्तान की लड़की, उसने कैसे मतलब she raised her voice, and तो वो चाहती है कि you should also know how to raise your voice. I want every girl to know that her voice can change the world. है ना. Now next slide.
Again, in the end, I will say registration is necessary, pre-test, post-test and feedbacks are necessary. Certificate will be awarded to participants on course attendance and submission of registration, pre-test, post-test and feedback. So thank you, sincere thank you to all of you. Next slide. Very, you all, thank you for hearing us. Thank you, everyone. Let's tweet together. Hashtag Dheera together. Building a voice. Our target is 100,000 plus tweets. So add your courageous voice to the conversation. Thank you once again for patience listening. Thank you. Thank you, Sriman. Are there any questions? Welcome, madam. Sriman, are there any questions, please? Or you can move on. Madam, you're done with your Yes, topic? I am done. I am done with my topic. Thank you so much. You ask students, madam, if there are any questions, or we can close the section. Are there any questions? Please let me know. Huh? There are no questions in chat box, madam. Okay, then you go ahead. I'm done with my slides. Okay. We can leave, madam. Shall I close the meeting? Okay, thank you. Welcome, ma'am. Ma'am, I'm calling you. Okay, okay, you are calling. Okay, no question about any, no. Can we leave the meeting, ma'am? Dr. Shwetal, Yeah. We just write the name of the school that we are addressing to. They want on the chat box. Okay. The full name Karnal or write the names of the school, please. to the principal. Okay. In chat box, you can write. Yeah.
Ma'am, you see? Yeah, yeah. Yeah, I'm seeing. You want my name and email ID? No, they just said ki just write the name of the school. Okay, okay. That's all now. So now we can leave. Sriman. Yes, madam. We can leave the meeting. Okay, then thank you, Okay. Dr. Shweta, and Thank you, Veera ma'am. thank you. Okay, Bye. see you again. Bye. Bye. Thank you, Sriman, Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. taking by leave. Okay, thank you. Thank you, Shriman sir. Bye. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Okay. I am leaving now. Okay. Okay, ma'am. Okay, bye bye. Thank you. Thank you very much. Welcome, ma'am.